रुक चुका है और शाकिर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद इस वक्त ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाह चुके बेहतर गेंद थी। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम शाकिर came along the carpet and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run। और फिर से एक बार शाकिर की गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा शॉर्ट फाइन लेग के दिशा में और इस बीच निशान विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद गेंद स्टंप्स पर टकरा चुकी है और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर और यहाँ पर देखते हैं तीसरे अंपायर यहाँ पर क्या निर्धार देते हैं। तो मैच नंबर 8 इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत केपीएल कुडला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 विच प्राउडली प्रेजेंटेड बाय श्री देवी क्रिकेटर्स एंड यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड यहां पर एक शानदार प्रगति करता हुआ अंडर फ्लड लाइट्स और मैच नंबर 8 इस वक्त शुरू हो चुका है आज का और कुल मिलाकर इस श्रृंखला का मैच नंबर 18 की शुरुआत यहां पर हो चुकी है इस दूसरे दिन में। He's gone. So signal came from the third umpire. The batsman got shot out of his crease और इसी के साथ यह पहला विकेट गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज रक्षण आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और तीसरे 3 रनों पर पहला विकेट यहां पर खो चुका है मैंगलोर सुपर टाइटंस। तो इस बीच रनआउट के रूप में पहला विकेट गिर चुका है और इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का यानी नंबर 3 बल्लेबाज का और नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर इस वक्त उतरते हुए दर्शन और वो इस वक्त सामना करेंगे शाकिर की गेंदों का। तो पहला पावर प्ले ओवर यहाँ पर जारी और दर्शन इस वक्त कुछ बातचीत करने के बाद नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज इमरान के साथ अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। 2 गेंदें बाकी इस ओवर में, 2 बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर। शाकिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अंपायर से गार्ड लेते हुए इस वक्त दर्शन और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। 7 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात पावर प्ले के अंतर्गत और अपनी अगली गेंद लेकर शाकिर इस वक्त तैयार। फील्डिंग का मुआयना करने के बाद दर्शन इस वक्त सामना करते हुए शाकिर की गेंदों का। ये गेंद इस वक्त गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा और गेंद सीधे सबसे पर टकरा चुकी है। फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था लेकिन गलत लाइन पर खेल गए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई लेग स्टंप पर और इसी के साथ यह विकेट नंबर 2 गिर चुका है। दौर्भाग्यशाली रहे दर्शन, ढीली गेंद का फायदा नहीं उठा पाए और आखिरकार यहां पर विकेट गंवाने के बाद पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में पेविलियन वापस लौटते हुए और दूसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ इस वक्त रेडविंग्स माफ कीजिए मैंगलोर सुपर टाइटंस का यहां पर दूसरा विकेट गिर चुका 3 रनों के ऊपर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। दिस इज एन एब्सोल्युटली शॉकिंग स्टार्ट नाउ फॉर मैंगलोर सुपर टाइटंस। प्रताप प्रमुख बल्लेबाज इस वक्त मैंगलोर सुपर टाइटंस के इस वक्त क्रीज पर मौजूद। निस्संदेह प्रताप को इस वक्त एक पारी ऐसी खेलनी है जो उनके टीम को सही मकाम तक पहुंचा सके और काफी अनुभव है प्रताप के पास और देखना यह है कि वो इस वक्त अपनी टीम को सही तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। तो इस बीच शाकिर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त प्रगति पर। शाकिर ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को इस वक्त ढकेला, बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची थी इस वक्त स्लिप डाउन पर। 1 रन का इजाफा हो चुका। 1 रन के इजाफे के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर और बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है शाकिर का जिसमें सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए और बेहतरीन गेंदबाजी की जो उम्मीद थी उस उनके कप्तान को, उस उम्मीद को यहां पर रेडविंग्स रेंजर्स की ओर से वो 100% साकार कर चुके हैं। तो अब 7 ओवर का खेल बाकी और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज तो यज्ञेश इस वक्त तैयार और यज्ञेश जैसे गेंदबाजी पर उतरे उनके लिए एक इनाम घोषित किया गया है। 500 रुपए हर विकेट के लिए यज्ञेश के लिए घोषित किया गया है। रेडविंग्स रेंजर्स के जो बड़े फैन हैं उन्होंने इस वक्त घोषित किया है, बिग फैन ऑफ
Red Wings Rangers. And now it's a 500 rupees cash prize for Yajnesh for every wicket. And also दिस टाइम हियरी बॉल से इस बार गेंद को खेल दिया। इस वक्त फाइन गेंद निकल चुकी है इस वक्त थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। तो जहां तक इस वक्त सवाल है स्ट्राइकर का, तो स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार इमरान, और इस बीच एब्सोल्युटली इट्स इमरान इज नाउ गोइंग टू स्ट्राइक, और यज्ञेश इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, और इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार रहा। और यज्ञेश इमरान के लिए दाहिने हाथ माफ कीजिए बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लेकिन नॉट क्वाइट विकेट। रन के लिए दौड़ पर एक्स्ट्रा कवर पर निशाना चूक चुका है, और बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन फैक्ट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। यज्ञेश एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, प्रताप सामना करने के लिए तैयार। निस्संदेह एक साझेदारी की जरूरत इस वक्त बल्लेबाजों को। ये गेंद terrific, this is an absolutely terrific, just moving a little bit outside the off stump at the last moment, और इस गेंद की तेजी को, द क्विकनेस ऑफ दिस बॉल समझ नहीं पाए इस वक्त प्रताप, और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद तेजी के साथ विकेट कीपर के हाथ में बेहतरीन गेंदबाजी। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद प्रताप के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, अपील नकार दिया। इट्स पिच्ड आउटसाइड द लाइन अ लिटिल बिट एट द लास्ट मोमेंट, और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। तो 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और यज्ञेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 500 रुपए इस वक्त इंतजार कर रहे हैं यज्ञेश का हर विकेट के लिए, जो रेड विंग्स रेंजर्स के सबसे बड़े फैन ने, सबसे बड़े अभिमानी ने घोषित किया है। और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 7 रनों पर। एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज रेड विंग्स रेंजर्स के, और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यज्ञेश बाएं हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले खत्म होने से पहले की अंतिम गेंद। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला जा चुके बेहतरीन ओवर के समाप्ति। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर केम टू फ्रॉम यज्ञेश। विकेट तो उन्हें नहीं मिला, लेकिन सिर्फ 3 रन इस ओवर में उन्होंने प्रदान किए, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाज मैंगलोर सुपर टाइटंस के अपनी सही राह को तराशते हुए। जस्ट सेटिंग फॉर द राइट ट्रैक फॉर मैंगलोर सुपर टाइटंस बैट्समैन। इट्स 7 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। तो इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए सात रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ यहां पर, और गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए प्रज्वित इस वक्त गेंदबाजी यहां पर प्रारंभ करते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो बल्लेबाज इस वक्त प्रताप पहली गेंद। ये गेंद इस वक्त हल्के से पुश कर दिया गेंद को, सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए, और गेंद जब तक पॉइंट पर पहुंची 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इन फैक्ट। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए प्रज्वित फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद इस वक्त तैयार, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, जगह बनाते हुए गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन मिलेगा,
और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। रन्स इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए चाहिए कुछ करारे स्ट्रोक चौके और छक्के के रूप में अपने टीम के रन की गति को एक्सेलरेशन बढ़ावा देने के लिए इस वक्त बल्लेबाजों को। और एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए रेडविंग्स रेंजर्स के गेंदबाज ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े सीढ़ी में, और पर फील्डर गेंद पर पहुंचे, थ्रो किया लेकिन थ्रो इस वक्त गेंदबाज के पहुंच से बाहर। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और प्रज्वलित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान रेडविंग्स रेंजर्स के। और इस बीच प्रज्वलित ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को छोड़ दिया इस वक्त, और वाइड का इशारा क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रहे थे। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। फिर से एक बार प्रज्वलित गेंदबाजी करते हुए इस वक्त इमरान के लिए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई, और एक बार फिर से वाइड का इशारा। लगातार 2 वाइड यहां पर प्रज्वलित फेंक चुके हैं, और निस्संदेह ऐसे लगातार वाइड फेंकने से बल्लेबाजों का मनोबल यहां पर बढ़ता है। तो यहां पर 2 लगातार वाइड फेंकने की वजह से कुछ हद तक बल्लेबाज का मनोबल इस वक्त बढ़ चुका है, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और गेंदबाज प्रज्वलित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी बिल्कुल जमीन के सहारे आते हुए, और गेंद पर कोई रन यहाँ पर नहीं मिला। 12 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका। तीसरा ओवर प्रगति पर। फिर से एक बार प्रज्वलित इमरान के लिए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, निशाना टकराता तो निस्संदेह प्रताप की पारी पर पर्दा गिर सकता था यहाँ पर, लेकिन निशाना चूका और विकेट कीपर भी ठीक तरह से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। थ्रो पहुंचा, थ्रो चूका, विकेट कीपर के हाथों से भी छूटी गेंद, और बल्लेबाज 1 रन के साथ अपना छोड़ सफलतम यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रज्वलित यह गेंद रिवर्स शॉट, लेकिन फील्डर इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद जरूर थे, लेकिन गेंद उनकी दाईं ओर से निकलती हुई एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। प्रताप के बल्ले से ये चौका लग चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा मिसजजमेंट हुआ था। डीप एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर थे, पहले सोचा कि गेंद उनकी बाईं ओर आएगी, और जैसे उन्होंने भापा कि गेंद उनके दाईं ओर से निकलने वाली है, अपने आप को संभाला, अपने दिशा को जब तक बदलते गेंद उनको बीट करती हुई सीधे सीमा रेखा के दीवार पर जाकर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रन। पहला बेहतर और फर्स्ट better over came to an end in Mangalore Super Titans innings. 10 runs came from this over, और 3 ओवर के बाद इस ओवर के बाद कहना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस ओवर इस वक्त कुछ हद तक संभल चुका है यहाँ पर मैंगलोर सुपर टाइटंस। चौथा ओवर कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त शुरू होता हुआ। दक्षित इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है मैंगलोर सुपर टाइटंस के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ना है तो। और इस बीच दक्षित ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए एक बेहतर गेंदबाजी की तलाश में नया ओवर प्रारंभ करते हुए दक्षित पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, डेलिकेटली इंटेलिजेंटली प्लेड विद अ ट्विस्टेड बैट एट द लास्ट मोमेंट ऑन टू बैकवर्ड द थर्ड मैन एंड क्रॉस्ड ओवर फॉर द सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। इनफैक्ट तो फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रताप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद प्रताप के लिए बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली गुड वन, परफेक्ट लेग कटर, जस्ट मिसिंग और शादी ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 18 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर
गेंद को उछालना चाहा, स्लॉग स्वीप शॉट इस वक्त खेलना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद के पहुंच से बाहर और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। दो बेहतर गेंदें दक्षित इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर तब विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रताप के लिए यह गेंद रिवर्स शॉट खेला, लेकिन गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही थी। मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। रन अभी भी ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए और इस वक्त दोनों बल्लेबाज कोशिश जरूर कर रहे हैं चौके और छक्के लगाने के लिए, लेकिन सफलता काफी हद तक उनके पक्ष में इस वक्त नहीं है। सिर्फ एक चौका अब तक प्रताप लगा चुके हैं। ये गेंद अच्छी गेंद जब किया, लेकिन उतना कुछ ज्यादा नहीं। ओह, प्रताप काफी आगे निकल आए थे इस वक्त और इस बीच साइकिल रन पर खतरा और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। नॉन स्ट्राइकर रन पर प्रताप का विकेट बचा, लेकिन स्ट्राइकर रन पर विकेट गिरा इमरान का। देखिए किस तरीके से हुआ था, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया था, इस वक्त प्रताप बचे, निशाना नहीं टकराया और दूसरे फील्डर बैकअप करने के बाद उन्होंने थ्रो किया स्ट्राइकर एंड पर और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ। इससे पहले कि इमरान क्रीज पर वापस लौट सके, निशाना स्टंप्सों पर जा टकराता हुआ और गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ 19 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। तो धीरे धीरे यह साझेदारी यहां पर जम रही थी और यहां पर यह साझेदारी टूटने के बाद एक बार फिर से परेशानी के बादल यहां पर मैंगलोर सुपर टाइटंस के बल्लेबाजों के ऊपर मंडराते हुए। हर्षित एक और बेहतर बल्लेबाज, पिछले मैच में उन्होंने एक छक्का और एक चौका झड़ा था और यहां पर उनका आगमन होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दक्षित की ओवर की आखिरी गेंद का। और दक्षित इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज हर्षित के लिए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए एक्स्ट्रा कवर डीप थर्ड मैन इस वक्त मौजूद और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दक्षित। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अंतिम बार हर्षित के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को खेलते हैं एक हाथ से विद ट्विस्टेड बैट, एक रन मिलेगा। एक रन से बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सो हाफ द वे मार्क, 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 20 रन्स ऑन द बोर्ड, 3 विकेट लॉस, स्टिल द बैटल इज नाउ ऑन। 4 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर में यहाँ पर मैंगलोर सुपर टाइटंस के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो 4 ओवर का खेल बाकी और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. Meanwhile, I request for the next match, Trescon Vikings as well as KKR Mangalore, and kindly request you to complete the formalities of signatures as soon as possible. Ali Trescon Vikings ಮತ್ತು KKR Mangalore ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So Mangalore Super Titans are slight a bit of struggling in the form of run rate. They got 20 in 4 overs by losing 3 wickets from the far end. First ball, right arm over the wicket, Shakir bowls and plays it quite nicely down to left of that short mid off field and ample time for batter Ashit to complete the single. Ashit in the previous match, he played a very good innings for his team, even though he couldn't manage to take his team to victory. But he played a good game of cricket. This time, good piece of fielding there by the fielder. Quick walk. Good walk from that fielder at Cow Point, Prajvit. And one more single has been added to total. With that single, Skuban moves on to 22 for the loss of 3 wicket. Red Wings Rangers, they won their 2 matches of league stages. Again, lovely delivery, almost following the batter, seeing that batsman slide a bit up, making room to play the shot, Arshit. Then Shakir bowls just around his legs and forced the batsman to play that one back to him. Swept that one very nicely down to deep square leg. The running hard, that was definitely going in the gap between mid wicket and square leg, so that Arshit managed to complete that couple of runs quite easily. 24 for the loss of 3 wickets, which is sensible batting which is required under this condition. And Arshit is the one
knows that along with this captain, they need to anchor the innings, need to get some runs, important runs for his team. This time he loved it. Look at the placement. It's been exquisite. This is a really, I want to say, it's a phenomenal cricketing stroke. How effortless he did. This is a very important for any batters to see where the fielder is. He knows that the mid-off is up in the circle. There's no long off, but long on light slide a bit wider. Even there is long off, no long off, there is an extra cover. That was an absolutely fantastic placement there from Arshit. And score now moves on to 28 on the board for the loss of 3 wickets. The catch, it is a call, but need to wait for the umpire signal. Yes, it is a chance of catch, but fielder is there in the short fine, like very far from that ball, so that 1 run completed. 29 for the loss of 3 wickets. Productive over on behalf of Mangalore Super Titans. They got runs what they really wanted. So 29 for the loss of 3 wickets. If you see the cricketing stroke of Arshit, which is played in the previous over, probably that kind of cricketing stroke we can see in the overarm cricket, the leather ball cricket, the cricket ball. What as a perfect word you want to say, that was a cricket ball. But this is a kind of cricketing stroke we can see in only the technique we'll find from those who are playing overarm cricket. Of course, Arshit is the one is regularly playing that overarm cricket. Along with Dinesh Acharya is out here in our commentary box, and our scorer, Mr. Satya Prasad, who is Satya Sarup, is the one who is played a very good overarm cricketer. So all we can see that some players are playing in overarm cricket and making a lot of impression both in underarm and overarm cricket. Now 30 for the loss of 3 wickets. I saw Satya Sarup playing some good cricket in box cricket, and when I was a commentator, he is a kind of hard hitter, absolutely hitting the ball. He's got a good eye and good eye combination when he was hitting the ball. Now one more single has been taken here, 31 for the loss of 3 wickets in the over number 6 in progress. Arshit back on strike now. Altaf Basavanagudi, one more very useful leg spin bowler. This time, have a look at the shot, have a look at the connection, one bounce into the fence. This is what I'm talking about, the high-end combination, and Arshit is got that the position what he took is exquisite. Nothing wrong with the line of the ball, I want to say. The ball is just curving around the legs of a pitch on the middle stump, slight a bit of deviation, and Arshit quickly changing his position just like a left-hand batter hitting the ball down to deep square leg region, boundary for 4 runs. Now the captain set one fielder down at deep backward point region for Arshit. 35 for the loss of 3 wickets in the over number 6 is in progress. Altaf Basavanagudi balls. Again, this is off the toes, very good looking stroke down to mid wicket. Have a look at the running between the wicket. This has been exquisite. Unbelievable. Doesn't look like the two batsmen are running between the wicket, but looks like the two deers in the middle of the pitch running between the wicket. Even the ball went straight to the hands of Prajwal down at mid wicket, but they did not bother about that. They only bother about how to get the runs in this slog overs for the team. Again, nicely plays it down to deep backward point region. Copybook style with the full face of the bat. Nicely driven there by Arshit. Once the batsman like Arshit will going to settle down, is always going to be a danger sign for the opposition. 38 for the loss of 3 wickets. Here is Basavanagudi balls. This time too much across the line of the delivery. Pratap
Maybe looking for improvising cricketing stroke, but he exposed his leg stump. And Basavanagud is quickly realizing that now my time to bring the ball around the legs of his and get the ball into the stumps, and he succeeded in that. Just I want to see it in a replay in the monitor, the kind of delivery ball. Have a look at that one. How far is moving to his off stump and exposing his leg stump. Need to connect the ball if you want to save from the wicket, and ball hits the stumps. Wicket number 4 back into pavilion. And Pratap played a captain's knock. He's hanging there in the middle. He scored a valuable relevance. It's very valuable under this condition. After completion of over number 6 is 38 for the loss of 4 wicket. 2 overs remaining. So 38 for the loss of 4 wicket, 2 overs remaining. Another 12 runs in 12 balls. It takes their team total into 50. That means it was a psychological advantage when you are going to depend that total because it is under floodlight. Just Marshall wanted to go for the big shot, but he's not getting that much of room to play the shot. Good bowling there by the bowler. Leg by call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single scope, numbers under 39 on the board for the loss of 4 wicket. Dakshit, the very, very talented bowler, got a very good tournament from the ball. Got a 4 wickets in one match. 3 wickets in 1 over. Got a man of the match for the bowling figure of 2 overs, 1 maiden, 4 runs and 4 wickets. Again the bowler Dakshit from the far end. Right arm round the wicket to the left hand batter Abhilash came into bat. One more very stylish and technical batsman will go into face. Dakshit round the wicket. Oh, what a delivery. What a delivery there from Dakshit. Absolutely. The batsman is almost trying to reach the pitch of the delivery to meet the bat. But ball just getting... ball just going away from the right and left hand batter. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Beautifully balled. Clean him up. What you were talking about the technically very sound player sometime. All technique will not going to work out in under-arm cricket. Because only the ball will going to do something special here. Ball just skidding and defeating the defense of left-hand batter Abhilash, and maybe he's just left the gap between bat and pad. And Dakshit got a huge wicket. 39 for the loss of 5 wicket. One more disappointment here for Abhilash, as he couldn't manage to impress in this match. The new batter in Ashwin Raj of HFC Oige Bazaar takes the fresh call from umpire. One more very talented player. Busy customer will go into face the next delivery from Dakshit. Dakshit bows. Nicely swept that one down to square leg region. Not more than a single. Altaf Basavanagudi there at deep square leg region. Only the single. So far it's going to be a good over for team Red Wing Rangers. They need to restrict the runs, and Dakshit is doing all the job in this over so far. 40 for the loss of 5 wicket. Dakshit again. Passed on by Suresh Mudabidri. This time Ashit went for the expansive drive, looking for the single. Ashwin Raj behind the stump, not interested to return the ball. Knows that if the ball misses the stump, it's going to be a chance of overthrow. Just a single there. 41 for the loss of 5 wicket. Quite over is going on here from Dakshit. Once again showing his excellency. Whenever his team is required some restriction in the runs. Appeal for leg before wicket. Going for the quick single. And will it going to be a chance here?
Umpire Suresh Murdabida doesn't take any risk here. He just straight away asking third umpire, you take the risk. So now here we will going to take the risk here as a third umpire. Sriraj, one more very good umpire. Being the cricketer of Gori Young Boys for a long time, we will going to give the decision. .41 for the loss of 5 wicket. Now umpires getting some different angles from M9 Sports to get the result of this run out. Scoreboard is 41 for the loss of 5 wicket. After this match, the match will be played between Triscon Vikings versus KKR Mangalore, and that could be the, yes, not a last match. Before that, after that, one match is remaining. Altogether 2 matches remaining after this match. In the day number 2. Out, which is a call from a third umpire. Ashwin Raj tried to drag his bat. Might be slight a bit of slow laziness in the end. If you make a little bit quicker, it can be safe. It's 41 for the loss of 6 wicket, and over number 7, which is completed, and last over going to start from the commentary box end. The new batter in for the side of Mangalore Super Titans, Aman. One more very young talented player, Aman. Here is again Yajnesh delivers the ball, and straight away Aman off the mark with a single. With that single, scoreboard moves on to 42 for the loss of 6 wicket in the over number last is in progress. So Ashit now need to take the initiative, and as far as acceleration is concerned for his team, but you playing against Yajnesh. Have a look at their connection. They're going for a quick single. Throw is a little bit wider from that short mid off fielder. So that quickly Ashit completes a single. Each and every run going to be very crucial in this last over. Both the batsmen realizing that not to miss a single delivery in this last over. They need to get runs in each and every balls. 43 for the loss of 6 wicket.
Again, edging it down to third man region. Shakir, the fieldsman, there in the short fine leg region, quickly moving towards the direction of the ball, towards the short third man region. He completes a single, then 44 for the loss of 6 wicket in the over number last is in progress. Mangalore Titans, after 2 matches, they won one, they lost one, and here is again. Yajnesh balls, wicketkeeper misses it. They're going for the quick single. Umpire says the batter as safe. Good running with the wicket, very good running with the wicket. Aman, who is the one, is running towards the danger end and completes that run very quickly. Then scored Namuzan to 45 for the loss of 6 wicket. The over number last is in progress. Now umpire Roland Pinto showing his wristwatch, saying to the fielding team, bring your one fielder inside the ring. You are exceeded your time limits. That is the 33 minutes which is given for each and every teams to complete their 8 overs quota. .45 for the loss of 6 wicket. 2 deliveries remaining, and when that 2 deliveries, only 4 fielders now outside the circle. Aman, can he able to capitalize that opportunity? Going for the big shot, misses the line completely, and now Ashit wanted a strike here, and he succeeded by doing this. This is sometimes the presence of mind is always required in cricket. Ashit now back on strike now. 1 ball remaining. He is a settled batsman in the middle. He wanted to finish off this innings with the big one. He definitely will going to try for that. But question raising here is that Yajnesh will going to provide that opportunity for the batters to get any kind of big shot here. 45 on the board. Not an underestimated total underlight. It's a good total. When it's very close to 50, the ball-to-ball runs is always going to be difficult if you ball well, field well. Ashit will go into face the last delivery of their innings. Yajnesh will go into ball his last delivery of his over. Left arm round the wicket. Ashit went for the big shot. No chance to survive. Dotted delivery and run out taken place in the last ball of their innings. Even Ashit back on strike, but it's not really effective. So that's it. Mangalore Super Titans finished their 8 overs quota and scored 45 by losing 8 wickets, and they set a
और अश्विन अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 18 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 2 विकेट के नुकसान पर। बाई का इशारा अंपायर का, और रन सभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए सिर्फ 2 कपल रन अब तक बन चुके हैं रेडविंग्स रेंजर्स की पारी में। तो ये बात ये दर्शाता है कि कितनी कसी हुई गेंदबाजी के साथ इस वक्त गेंदबाजी की है मैंगलोर सुपर टाइटंस के गेंदबाजों ने। अगली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया, स्लिप डाउन पर रनआउट का खतरा, लेकिन यहां पर रनआउट होते होते बाल बाल लपट चुके हैं। धीमा थ्रो था, गेंद को ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। और स्कोर इस वक्त बढ़ चुका है 1 रन के साथ 19 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। फिर से एक बार अश्विन ने गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में इनटू द गैप एज वेल, फील्डर पहुंचते हुए दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े, इस वक्त नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित बल्लेबाज देखा कि थ्रो पहुंच रही है इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछालना चाहा, शॉट फाइन लेग पर, रनआउट का खतरा, लेकिन नहीं, 1 रन मिला। 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 4 ओवर्स कंप्लीटेड एंड 4 ओवर्स लेफ्ट इन द इनिंग्स। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज देखते हैं कौन सा गेंदबाज नया ओवर इस वक्त शुरू करते हैं। 4 ओवर बाकी और 25 रन चाहिए विजय के लिए, 25 टू गेट इन रिमेनिंग 24 डिलीवरीज, एक्जैक्टली 6.25 रन पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम। देखते हैं उनकी पारी में बचे हुए 4 ओवर में क्या होता है। तो इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को एक बार फिर से इन बचे हुए 4 ओवर का आंखों देखा सुनाने के लिए। माइक्रोफोन पर आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. And nothing much difference between these two teams. And the comparison after completion of 4 hours at same stage, the team Mangalore Titans has 20 for the loss of 3 wicket, down 21 for the loss of 2 wicket Rangers. One more dotted delivery. Each and every dot ball will go in to create the problem here for Rangers. 25 required from remaining 23 deliveries. Pratap, right arm over the wicket, bounce to Ashwin. This time he wanted to flick that on off his legs. Got a little bit bat onto that and got the single for that. With that single, Skoban moves on to 22 for the loss of 2 wicket. 2 batters out there in the middle. Ashwin Raj is in non-strikers end, and Shravan again taking the initiative in the top of the order to getting some good runs for his team. Again, bowler's back drive, good stop on his follow through by Pratap in that occasion. Not quite intended. Shravan wanted to push the ball down to cover point region, but because of that extra turn in that ball, he managed to play that one back to bowler, but equally well fielded by Pratap in that occasion, diving to his right, stopping certain runs for his team, and Ashwin Raj coming down the track, having some word with the Shravan. 22 for the loss of 2 wicket. 24 more runs required for the victory. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಜರ್ಸಿ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, right arm over the wicket, Pratap bounce. This time again, nicely plays it down to short cow. Point region, misfilled by Abhilash, but good backup from the fielder Arshit from the short mid-off region. One more single to Shravan, and to his team, Skoban was under 23 for the loss of 2 wicket. Half of the job which is completed, need to complete another half of the job. That means 23 more runs required for the victory. Pratap bounce this time. Ashwin Raj looking for the expansive drive. His intention is to go over the top of the extra cover to get some couple of runs there, but not quite again hold up that one properly. Just a single there. 24 for the loss of 2 wicket. 22 more runs required for the victory. 19 ball remaining. What a match we are witnessing. Low scoring game, and it's going to be a very, very interesting. This time beautifully bowled, fantastic leg cutter there from Pratap, completely misreaded by Shravan. Good over there, Pratap, being the captain of the side, being the icon player of the side. He did a great job in this over.
After completion of 5 overs, chasing a total score of 46 to win this match is 24 for the loss of 2 wickets. 22 required from 18 balls. Some news which is coming from both the end. The water which is coming for the fielding side and for the batters. But it's not a water break for the fielding team, but it's a water break for the batters. But along with that water break, maybe the Naushad bringing some message along with that water bottle. Maybe is telling that one of the batsmen out of this to have to take an initiative of getting some acceleration of run rate. (22) required for the victory. 18 balls remaining. Bowler from the far end, Ashwin Raj. Ashwin to Ashwin. Bowler's back drive. Good stop by Ashwin on his follow through. And he's back into pavilion. This is a huge wicket for Mangalore Super Titans. Super fielding there from Ashwin Raj on his follow through. Bowler's back drive. And very good piece of fielding there by the bowler on his follow through. This is a very important wicket which is taken there by Mangalore Super Titans, because Ashwin Raj is a settled batsman in the middle. Is back into pavilion. Still each and every dot ball will going to create the problem here for Redwings Rangers. Now is the danger batsman walking towards the middle. Man who got runs from his back. It's none other than a very good striker of the ball. He's a killer of the ball. And none other than Vaishak came into middle. In the previous match, hit 2 massive sixes, scored valuable 19 runs unbeaten for his team. Now again the condition asking him to play some responsible innings for his team. Again the one more dotted delivery. One more dotted delivery. 2 dotted deliveries to start with here. 16 remaining. 22 runs required for the wicket. This time I got a single down to deep correction down to mid-on region. 25 comes up. It's not an easy 25 for Rangers. It's a hard combined runs against the disciplined bowling performance, against the superb piece of fielding by the Mangalore Super Titans. 21 required for the victory. Ashwin to Vaishak, lofted at one, but not quite able to get the placement right. Just a single there for Vaishak. Oh my goodness! Now umpire, of course, third umpire is now available, and umpire can get the not available. Sorry, no third umpire here. Technical issue. Sorry. Yes, we can get. Yes, we can get third umpire here, and wait and see. Will it going to be an opportunity for the fielding team to get the wicket here? If he is able to get the wicket, it's going to be a huge wicket for Vaishak. He's the only danger batsman in the middle for the team Rangers. They can change the complexion of this game. What really happened there? The directive comes into play, and after the directive, Vaishak wanted to get a second run. His partner Shravan is not interested, and immediately after the bowler uprooted the stumps, and we need to see that when stumps are uprooted, the batsman is safe or not. That's what umpire wanted to see here, the third umpire. It's 26 for the loss of 3 wickets. All eyes of the supporters of both the team into the commentary box, because there is the third umpire. Sri Raj will going to give the decision of this is going to be very crucial. 20 still required runs. 14 more runs required for the victory. Next to the press conference. Next to the Mangalore Super Titans team. So not out, which is a call from the third umpire. The batsman Vaishak safe. Redwings Rangers supporter. Oh, taking a very long breath. That yes, he is safe there, and it's 26 for the loss of 3 wickets now.
20 required for the victory and 14 deliveries remaining. One big shot will go in to change the complexion of this game. But Ashwin Raj so far handling the pressure. Ashwin Raj from the vision in India end. Right above the wicket. Shravan going for the helicopter shot. And he got the distance. Can you believe this? Unbelievable struck, I want to say. This is one of the phenomenal and mesmerizing cricketing stroke, I want to say. Have a look at it and how effortlessly played that helicopter shot. Unbelievable wrist work. Unbelievable wrist work. Oh my goodness. Even I can't believe my eyes. How well he managed to send that one into difficult area. That is a deep long off region. We are all talking about the Vaishak will go in to change the complexion of the bag. But this man Shravan is being there for a long time in the middle. And very important time he's got a 6. 32 for the loss of 3 wicket. Now 12 to get. Frustration and the pressure straight away into the bowler. One more single added to total. 33. 11. 13 required for the victory. A lovely delivery there from Ashwin Raj. Now Shravan asking umpire to give the wide, but umpire says it's not a wide. Well within the reach of the bat. Wicketkeeper behind the stump gathers the ball. Last 2 overs remaining. 12 balls remaining. 13 runs required for the victory. Now they're challenging the umpire. Batsmen, of course, they got someone review to challenge the wide decision of the umpire. So Suresh Mudbidre asking third umpire to see whether that is a wide or not. "13 required from 12 balls. Maybe someone is asking for that because it's a very crucial. We're able to get the decision in their favor. They not only they going to get one extra run, but the bowler need to re-ball that. This is why he's asking the third umpire, the challenging the umpire to give the decision for third umpire. It's 33 for the loss of 3 wicket. One more message coming here along with the water. Naushad is a man. Bringing the water for Shravan. What a shot I want to see that. The stroke which is played by Shravan. It is unbelievable, isn't it? Especially in unrun cricket. We can see that in a cricket ball, over-arm cricket, hardball cricket, you can easily play that helicopter shot. You can get the distance because the hardness of the ball will takes the ball into the fence. But in a tennis ball, it is not that much hard. Very soft ball which is used for this cricket tournament, and it's unbelievable how the ball which is travel that such distance. It's absolutely a strong wrist what this man has got, Shravan. 33 for the loss of 3 wicket in the over number 7, which is not really completed because decision which is pending here, whether the ball which is wide or not. Umpire Shiraj getting some angles to get that. So all we can see that very all that we can see the spectators very interesting eyes want to see that whether the ball which is right or whether the ball is wide. It's a no wide call from a third umpire. That means 13 ball. The certification 12 balls and 13 runs required for the victory. Match is evenly poised. But I think might be Rangers are slight a bit of an upper hand.
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಗೌಟ್ ಇದೆ ತಮಗೆ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಗೌಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ enjoy the match by sitting inside that dugout. And now 13 to get from last 2 overs, and bowler will go into ball is Fayaz. One more very talented bowler will go into ball that very crucial over, very important over, the decided over. And ball the batter in front of him, it's Vaishak. Vaishak want to stop the ball. They're going for the big single chance of run out in fact in the striker's end. But I think it's about the Shravan is the one is run very quickly. At the between the wicket, he completes that quick runs now. Very, very important here for the wicket keeper behind the stump to gather the ball whenever the bowler misses the bat of the batter. It's by it's 34 for the loss of 3 wickets. 12 to get, 11 to go. What a match. Absolutely, it's a good match in front of very good spectators out here in USG Cricket Ground. The day number 2. Now Shawan back on strike. What innings he is playing, but job which is not yet over. Of course he got a 6. Of course he brought his team into that track, but job which is not completed because he need to get another 12 runs in remaining 11 balls. So that's why it's a very important, need to be cool and calm. But here is the bowlers of Mangalore Super Titans. They're searching for dotted delivery, and more than anything else, they wanted to send this man back if they wanted to back in the game. 34 for the loss of 3 wickets, 12 to get from 11 balls. Here is Fayaz. Balls very well sapped at one down to square leg. In the sense, I want to say, if a Shravan misses that ball, then definitely will going to find Flum in front of wicket. But he's got a batter to that and got a single for that. 35 for the loss of 3 wickets. Now 11 to get from 10 balls. Vaishak back on strike. Fayaz on his follow through, bowling right arm over the wicket. Balls, and they're going for the run, but it's going to be a wide. Now equation is becoming a little bit easier. Not only they're going to get extra deliveries, but extra runs will be added to total. It's 37 for the loss of 3 wickets. 2 wides will going to provide lot of relaxation here for the batter. 9 to get. Now 10 balls remaining, and first time we are seeing that yes, the asking run is coming down under 6. 9 to get. This time is bowled him. Fayaz is back. Got a wicket what they really wanted. Will it going to be a turning point of this match? Because whenever the new batter coming to the middle, it's not easy for a new batter to handle the pressure. That's why I'm talking about not to throw the wicket. He got the match in his favor, but not finishes the match. The Fayaz got the wicket here. What innings he played, but still it was absolutely one of the best innings I want to say from him under pressure. And that's why you're getting some round of applause from the teammates. Shravan scored a valuable 18 runs for his team and brought his team into almost the winning track. And Captain Karna walking towards the middle. Known to be in the nickname as a match finisher. And once again, he came in that position that he need to finish the match for his team. Not in a big guns, but only in a sensible batting which is required here. Ball to ball runs. 9 balls remaining. 9 runs required for the victory. Here is the bowler Fayaz. Balls to Karna. Karna so good in that sweep shot. He loves to do that because condition is really forcing him to do that, and he got a single for that. 38 for the loss of 4 wicket.
8 balls, 8 runs required for the victory. Vaishak back on strike. Short third man, short fine like one fielder very close to the batter at short extra cover. Short mid wicket. Pushing and running, hitting the stump, missing the stump. Opportunity for the overthrow runs. They completed a couple of runs. Luck is favoring Vaishak, because if it is a direct hit, I think it's all over. Nothing wrong with the attempt by the fielder, because if you're able to hit the stump, not only will going to get the wicket, but he's going to save one run. But by doing that, they lost one more run here. This is a cricket ball about we are talking about. The 40 for the loss of 4 wicket. It's a very, very important backup in the sense that is a fielder is in the deep long on, so no one there to back up certainly. It's very difficult. So now, again, they're looking in a strong position. Vaishak playing a very sensible knock, but it's this time deflected from the leg. But he's not really bothered about how the runs are coming for his team. But each and every run going to be very important. 41 on the board for the loss of 4 wicket. Last over remaining. 5 runs required for the victory. They got 6 wickets in hand. All are tense here. We can see the tense faces in UCG cricket ground. Last over is in progress. Vaishak is on strike. Once again, Vaishak is playing a very important innings. Not the kind of innings he loves to play, but he's today in this particular innings he played a responsible and sensible knock. The previous match he played a hard hitting knocks because situation asking him to do that so. And now he's playing a different role. This is what I'm really loves to see from youngsters playing as per the condition required. Now 5 required. Rakshak the bowler, and straight away he picked up a single for the first ball. So this is I think is a good move by the captain of Mangalore Titans to bring Rakshit, because he is not a kind of bowler who bowl along the carpet. When you're bowling the flighted deliveries, there is a possibility of getting 1 or 2 dotted deliveries. So this is what risk the captain of Mangalore Titans wanted to take, and wait and see how well Rakshit will go to justify the decision of the captain. 5 remaining, 4 required. Karna is on strike, captain of the side. Will go into face. 5 ball remaining, 4 runs required. Here is Rakshak. Balls. This time they're going for the single. Chance of run out. Rakshak will not go into attempt because he knows that it was backup. It's a little bit, I think the fielder is in the deep, so that they completed a single here. 2 balls, 2 singles. (43) for the loss of 4 wicket. 3 required from 4 balls. Well. Rakshak again back to his bowling mark, searching for the dotted ball. From the vision in the end, right arm over the wicket. Defeated the bat. Wicketkeeper fails to collect the ball. And the bye call by umpire. This is a frustration. Extra bounce. You cannot blame a wicketkeeper for that, because but we need to see that Rakshak is a tall bowler. Certainly there will be extra bounce because of his height. So probably the fielder wicketkeeper need to be ready for that. But he missed it completely from his hand. No excuse. 44 for the loss of 4 wicket. 2 runs required for the victory from 3 balls. 1 for tie. 2 for win. Closing fielders. Try to saving the singles. Rakshak will go into try again from the far end. Balls to Karna. This time he misses it. Rakshak will go in to make a run out, but Karna will go in to sacrifice this wicket. Now tense is mounting up because 2 balls remaining, 2 runs required for the victory. Match is not yet over.
So what a match we are witnessing. Absolutely, it's one of the best match I want to say in the day number 2. 2 runs required from 2 balls. But very good news here for team Rangers is that settled batsman Rakshak is on strike. The new batter is in an on-strike again. That is Safan. Rakshak will go into try. 2 balls, 2 runs required. Decider delivery. Balls, pushes, intelligent cricket in the gap. Will they come for the second? Now they're going for the second. This is what I'm talking about. Sensible thinking. Because he's a subtle batsman, he's now watching the ball very well. It's not that easy for the new batsman to see the ball, to sight the ball. That's why he wanted back in the striker's end. 1 required from 1 ball. Will it going to be a first tie of this KPL? The spectator don't expect any super over here because this is a league stages matches. If the match will go into tie, the points will go into share. But in IPL there is a super over. If the match is going to end in a tie, in IPL there will be a super over. But this is not IPL. This is a KPL. Now 1 ball, 1 run required. Have a look at the field set here. This is a test match fielding scenario. 1 ball, 1 run required. Vaishak is on strike. Rakshak is on attack. Misses the ball. Looking for the run out. Directly it comes into play. Now umpire will go into asking for the third umpire. But look at the celebration. Basavanagudi is celebrating his victory. But even the fielders also celebrating their victory. This is not a victory I am talking about for the tie. What a fantastic match this comes to an end. But need to wait another 2 to 3 minutes because will it going to be a tie? Will it go into a victory? If it is a not out, I think Rangers will be the winners. If it is a run out, then the match will go into be a tie and both the teams will go into share the points. What a match. What a innings Vaishak is played then. But wicketkeeper, I think there might be the opportunity there for him to gather the ball and make the stump out. But we'll wait and see. What a fantastic match we have witnessed. The countdown is going on. The heartbeat is going up. What could be the decision here? Rangers wanted the full 2 points. And that last decision coming here is not out. And Rangers won the match. The thrilling finish. And they won 3 out of 3 matches. And Mangalore Titans, unfortunately, after that great